नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मेरे साथ मेरा भाई है विनोद उससे उनसे बात करेंगे कि पिछले 6 दिनों में मार्केट में लगातार जो गिरावट आई, लगभग 1000 पॉइंट निफ्टी गिर गई है। आज तो 160 पॉइंट ऊपर है जब हम बात कर रहे हैं। इसको हम डेड कैट बाउंस बोलते हैं। अभी डेड कैट बाउंस हो रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मार्केट क्यों गिरी और कितने और गिरेगी, और क्या ये रिकवरी है जो आज रिकवरी हो रही है, ये रिकवरी है, क्या होगा मार्केट का, और किन किन कारणों से मार्केट नीचे गिर रही है, इसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। पहले ही अंग्रेजी में करेंगे, उसके बाद उसको मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा। It seems to be the explanation across the board seems to be is because of the US bond yield, because of the Israeli-Hamas uncertainty. It's the main reason why they're claiming all this, saying that FIIs are spooked by things at domestic level than international level. So they're withdrawing massively from Indian markets because of this. First and foremost, US bond yields have been high for a long time. Yes. So it's not happened yesterday. Yes. What happened is when the Indian markets were below their peaks, that is below 18,600 for a long time, FIIs came in and pumped in a lot of money and took it all the way to 20,200. Even at that time, I pointed out and said, US bond yields are very strong. There is no end to this pain, and the pain will continue. Of course, it took nearly 6 months for it to happen, and then the fall happened. From June to October, it went high and then it collapsed. The collapse has been far faster. For a long time, it was between 19,300 to 19,800, and 19,300 was decisively broken yesterday. And so, if you say that the bond yields happened only day before yesterday or 7 days back, and then before that everything was hunky-dory, no, it was not. The entire October, FIIs have been selling. And they have been selling in October also. And they will continue to sell in November also. So what happened is, the domestic investment DIIs, basically LIC and your active mutual funds, decided to take a pause. And when they decided to take a pause, the just market bottom fell off. If you look at the stocks that are really corrected, yesterday HDFC Bank was at a near 52-week low. That was a FII, Major correction. FII favorite. And FIIs have been continuously selling. And as far as FMCGs are concerned, Unilever, Nestle and all are at huge valuations that cannot be justified unless profits and turnover goes up by 20% every year. Correct. But you have had single digit prices. And they have been increasing prices and cutting volumes. And in spite of that, volume growth is not there. And now yesterday Unilever said that they are going to cut the prices of soaps, and so that the local players will feel the pressure. So basically what has happened in India, and it is borne out by income tax details also, the rich have just got richer. That is the top 1%. Now, correction. Anybody who makes more than ₹1 lakh is rich. Yes. In a month. Yes. This is an individual I'm talking about. True. Not a family. If a family of 1 or 4 is dependent on a 1 lakh salary, it's not rich. An individual alone living by himself or herself, yes, and is making at 1 lakh. And a husband and wife making more than 1 lakh, 2 lakhs, yes, with 2 kids to support is rich. Right? Yes. So you have to go by per capita income of a family. And that top 1% is anybody which family which has more than ₹1 lakh. That is per capita income of that family is more than 30,000-40,000. That is, each member of that family can afford to spend 30,000-40,000 rupees. Correct. Those are the ones who can buy these SUVs that are selling and the entry-level cars that are not selling. So how much more soap can you buy? So that's why. How many more cars can you buy? How many more cars you can buy? How many more flats can you buy? Exactly. So that is really what is causing the pain. Yesterday I was listening to some analysts in TV for a change after a long time. They were trying to tell why Asian Paints is slightly down and volume growth is 6%. Is it because October there was no rain, so why did people paint? These two people are basically rookie reporters.
they are trying to tell me that Asian Paints sales will go up because there is painting season in October, November. Asian Paints is selling at excess of 50 times earnings, 60 times earnings. Very There is huge valuation. Yeah. There is nothing in Asian Paints that can justify that valuation. Yes. Paint is a very easy product to make. And today, 2 more competitors have entered. JSW Paints has entered. And also, you have got Grasim who is going to enter. There is Aditya Birla. Yeah, Burger. Aditya Birla who is going to, Kumar Mangalam Birla who is going to enter the game. So you have 2 people who are now getting onto this game. And both these people have deep pockets and are going to put enormous pressure. And both of them believe they are in cement and the other guy is in steel and cement. So they feel the same distribution channel Correct. is going to carry Matches their existing pot. Yeah. And this is Asian Paint is a high margin product. So straight away these guys want that high margin. So there's going to be more competition. Margins are going to be under pressure. Sales is going to be pressure. Therefore, the price is stagnant or is correcting. Instead of saying that it will turn around, tomorrow it will become okay, day after tomorrow it will become okay, it's not going to happen. No. Right? And when Malaya sold Berger Paints, the international business of Berger Paints went to Asian Paints. Yes. So what I'm trying to tell you is Asian Paints is already at an extreme valuation. Unilever is at an extreme valuation. Nestle is at an extreme valuation. If you have the Domino's Pizza, it's at extreme valuation. You have reached the limits at which you can sell because the way the economy is divided. So Yes, the your pool which is who have the disposable income to buy all this is becoming smaller and smaller. Smaller and smaller. In fact, there was a paper clipping in which Titan is now saying that they are going to have a deluxe premium store. Yes. Where the entire, by invitation only you can enter. Correct. And so it shows you where money is, Titan is seeing money. Where is Titan is seeing money. And the Instead minimum of trying order, to make the common man watch, which is originally in the concept of Titan. And now he is saying that the entry level, that is the first minimum purchase you have to do there is 10 lakhs. Now, this tells you what the market is Where the market is heading. Yeah. And this is what is the biggest problem. So you have to look for pockets of value in the market, which I've been discussing several times, which we discuss in recent times also, and keep patiently accumulating. You cannot expect to be a billionaire in a day. No. Most people who listen to this want to become a billionaire tomorrow. Not possible. Not possible at all. Not possible. So मैंने ये बोला कि बॉन्ड यील्ड्स पिछले 4 हफ्ते से ज़्यादा हैं, 1 महीने के ऊपर से ज़्यादा हैं, और ये कारण नहीं हो सकती है कि अचानक 6 दिन में बॉन्ड यील्ड ऊपर बढ़ गई हैं इसीलिए मार्केट गिर रहा है. ये ठीक नहीं है. जो मार्केट ऊपर गया है 1800 300 से लेके 20,200, वो सिर्फ FII बाइंग के कारण गया. FII और DII दोनों बाई कर रहे थे. जब 20,000 के ऊपर चला गया तो FII बेचना शुरू कर दिया. पिछले 6 हफ्तों से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो LIC और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं और जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें बहुत सारे पैसे जा रहे हैं, वो खरीद रहे थे. स्मॉल कैप को खरीद रहे थे, मिड कैप को खरीद रहे थे, ज़्यादा खरीद रहे थे और लार्ज कैप को भी खरीद रहे थे. तो जब जब FII बेचता तो ये लोग खरीदते थे. लेकिन पिछले 6 दिनों में DI का खरीदना बंद हो गया, थोड़ा कम हो गया. बंद नहीं हुआ, थोड़ा कम हो गया और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गई. तो आज मार्केट 150 पॉइंट ऊपर है जब मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन ये टिकेगा नहीं. 2-3 दिन के लिए टिकेगा, उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा. जो FII 19,200 में बेच रहा था वो देखेगा कि 19,200 है मार्केट में, फिर से बेचूंगा. तो फंडामेंटल्स ठीक नहीं है. इसका मैंने विश्लेषण किया है एशियन पेंट्स की एग्जांपल से. एशियन पेंट्स लगभग 60 P/E रेशियो पे ट्रेड कर रही है. अगर मैं एक कंपनी को 60 की PE में खरीदना चाहूँगा तो उसमें 20-25% की ग्रोथ होना चाहिए. लेकिन आज ये मोहब्बत है जो HDFC बैंक का 20% का प्रॉफिट्स ग्रो हो रहा है हर क्वार्टर, उसको FII बेच रहे हैं. क्यों बेच रहे हैं? 2 कारण हैं. वो सोच रहे हैं कि HDFC की मर्जर उतना फेवरेबल नहीं होगा शॉर्ट टर्म में, और दूसरा उसको जहां प्रॉफिट है उसको बेच के बाहर निकलना चाहिए. पेंट इंडस्ट्री में ग्रासिम और JSW एंट्री कर चुके हैं. ग्रासिम का एंट्री अभी आ रहा है. ये दोनों डीप पॉकेटेड हैं.
एशियन पेंट्स का जो मार्जिन परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू का उसको में एक पोर्शन चाहिए। जेएसडब्ल्यू पेंट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, अभी ग्रासिम अपना पेंट कंपनी लॉन्च करेगा। तो ये सीमेंट में, ग्रासिम तो सीमेंट में है, अल्ट्राटेक सीमेंट बेचती है, और ये तो स्टील रॉड्स बेचते हैं, और जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी है। तो यही चैनल में जहां अल्ट्राटेक और जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू सीमेंट बिका जा रहा है, वही चैनल को एशियन पेंट सर्विस कर रहा है। तो मेरा पास 2 प्रोडक्ट है, मैं तीसरा प्रोडक्ट ऐड करूँगा, उसमें मार्जिन ज़्यादा है, उसका मार्जिन में मैं एक टेका लूँगा, यही बात हो रही है। और कल जब मैंने टीवी में बोल रहा था कि ये एशियन पेंट्स का शॉर्ट टर्म ब्लिप है, ये शॉर्ट टर्म ब्लिप नहीं है। आपका टर्नओवर 20-30% में नहीं ग्रो होने वाला है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री सीरियस ट्रबल में है। जो घर को रीपेंट कर रहे हैं सिर्फ वही रीपेंट करेंगे। एशियन पेंट्स बहुत महंगा है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स उसको खाने के लिए अभी तैयार हैं, जैसे इंडिगो, नेरोलैक, बर्गर पेंट्स एंड वो सब। अब 2 और प्लेयर उस चैनल को टारगेट करने के लिए आ रहे हैं, वो मार्केट शेयर खरीदेंगे। उनका ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ा है, एक तो आदित्य बिरला ग्रुप है, दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील है। और मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी जिक्र किया, जिनको पता है कि वो जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है और बिक नहीं रहा है ना, सो उनको रॉयल्टी देना पड़ता है, अपने पेरेंट को डिविडेंड देना पड़ता है, तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिक नहीं रही हैं। तो यूनिलीवर ने कल घोषणा की है कि वो सोप और डिटर्जेंट का प्राइस कट करेंगे ताकि सेल्स इंप्रूव हो। अगर प्राइस काटेंगे तो टर्नओवर डिप हो जाएगा। तो जब आप 60 टाइम्स 70 टाइम्स अर्निंग्स की मांग कर रहे हो तो आपको ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। वो ग्रोथ इस इंडस्ट्री में नहीं आएगा क्योंकि भारत में के शेप रिकवरी हो रही है। उसका तीसरा एग्जांपल मैंने दिया टाइटन का। टाइटन अभी बोल रहा है मैं छोटा मोटा सोनाटा जैसा ब्रांड नहीं बेचूंगा, मैं ये करूँगा, मैं एक प्रीमियम स्टोर खोलूँगा जहाँ मिनिमम सेल होगा 10 लाख का, और जो एंट्री आएंगे वो सिर्फ इन्विटेशन पे आएंगे। अगर ठीक ढंग से किया तो उनको कोई रियल एस्टेट का ज़रूरत नहीं है। जहाँ हर हाई एंड ताज होटल है वहाँ तो शॉपिंग बुटीक होती ही है, उधर डाल सकते हैं एंट्री लेवल के लिए। इंडियन होटल के साथ टाइप करके वो एक प्रीमियम होटल में वो खोल सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वैसा खुलेगा, लेकिन रेडीमेड है, मार्केट है। भारत के हर बड़े शहर में चॉइस लोकेशंस में ताज ऑलरेडी मौजूद है। करेक्ट। उसमें 300 स्क्वायर फीट लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है, और वहाँ इंटिमिडेट होके ओनली वेल्थी लोग आएंगे। तो टाइटन अपना एडवांटेज ले रही है। मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया, मशवरा दिया, ये नहीं होगा, लेकिन वो खुद का रियल एस्टेट भी ले सकते हैं। तो ये बोल रहा हूँ कि सारे ब्रांड जो हैं वो प्रीमियमाइजेशन के बारे में जा रहे हैं। जो 1% की पॉपुलेशन है, इवन बाटा, हाँ, बाटा भी वही कर रहा है, एडिडास के साथ टाइप करने की कोशिश कर रहा है। तो सेल्स नहीं है। जो वैल्यूएशंस मार्केट में हैं बड़े ब्रांड के, बाटा, एशियन पेंट्स, यूनिलीवर, टाइटन, इनकी वैल्यूएशंस का जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं जितना सेल्स और प्रॉफिट्स ग्रो हो रही है। तो करेक्शन होना ही है। तो आप पेशेंट रहें, निश्चिंत रहें, थोड़ा स्टॉक्स खरीदें, बहुत ज़्यादा ना खरीदें। इस स्टॉक्स को मैंने सिस्टर चैनल में बहुत डिस्कस की हैं। आपने इस वीडियो को देखा और इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।